Good morning, everyone. I hope my screen is visible and I'm audible. Yes. Good morning. It's almost time, and let's just get started. We are anyway recording this entire session, so we will be able to share it with partners who are unable to join or maybe joins later on. So, uh, once again, right, good morning to everyone, and thank you for joining this entire partner enablement session. This is going to be not a regular webinar, right? But then this is more like a very focused event, okay, to basically help bring all our partners and enable them on the open text solution, okay, and then how to basically go back in the market and then sell confidently, right? So the idea behind this entire session is enabling you, right? So, as ITCG, we work very hard and then, work with organization and companies like OpenText, okay, who bring in tremendous solutions. All right. So OpenText has over 100 solutions, right? Over 35,000 employees worldwide, and then close to 8,000 employees in India, right, based out of Bangalore, and then predominantly focusing on the data center and solution research and development part, right? So we have kind of partnered ourselves with OpenText, and then, like I said, right, we bring such solutions in the market with OpenText, and then we really want to enable all our partners, okay, so that you have all the required information, all the required access. All right. So when you are going and talking to the customers, you are not worried about, what to do next, right? Forget the sales pitch, right? But then along with the sales, right, there are a lot of enablements that happen in the background, right? So this entire session is about, those things that we need to do so that, we enable you, and then so that you go out there in the market and then sell confidently, right? So, like I said, this is not the regular webinar, right? But then, it's a proper open text partner enablement session. What we have done, because it's a longer journey, we have divided this into two phases. Okay, this is phase one, where we will talk about a specific things related to open text, and then we will be scheduling phase two, okay, where you can join again and then continue with the enablement. Awesome. So that's kind of the overall gist of this entire session. My name is Sanket Naik, right? I head the partner success team, and then everyone from ITCG who have joined, right, are part of the entire partner success team as well, right? Our whole idea behind setting up this team or having this team is to make sure that we work towards our partners being successful, okay, and then help everyone at each stage. We are also privileged. We also have Mr. Ram Tripathi from OpenText who have joined this webinar, this entire enablement session. Thank you so much, Ram sir, for joining this session. Right. So, we have his expertise throughout this entire session as well. And then, we can always pick his brain, right, when he's around us. Okay. Moving on. So this is going to be the quick agenda. Okay, I'm not going to take more than 5 minutes. We'll just kick it off. I'll quickly talk about ITCG professional services as well. And then I will hand it over to Amit Thakur and Ashok Rawat, who are our OpenText expert. And then they will basically help us enable on the entire OpenText platform, right? And then we have carved out at least 10 to 15 minutes at the end for all our question and answer session, right? So, feel free to ask your question at the end, or even post your question during the entire session. And then we have the entire OpenText team, right, at ITCG along with Ram sir to basically help us answer them. All right.
Now, I'm just going to take 2 minutes talking about ITCG professional services, right? So at ITCG, we really believe that, you know, supporting our partners, not during the sales time, but after sales, right? Especially during the technical hurdles is extremely important. Okay. And then keeping that specific point in mind, ITCG, we have really set up the entire technical support team. Okay, so we have 14 engineers dedicated to supporting our entire partner channel. Okay, throughout all the different solutions. All right. Now, the idea behind setting up this professional services team is to empower our partners, all right, to focus on closing more business. Okay, so you don't have to worry about, who's going to do the demo, all right, who's going to do the POC, all right, what happens after I have sold a specific solution, what about implementation? Okay, you don't have to worry about it. ITCG's technical team can work along you and then can work as an extension of your organization. And then we will be there standing by you, helping you at each of these stage. All right. Be that, like I highlighted earlier, be that demo on a specific solution, for example, OpenText, right? Be that activating a POC, running a POC, or even after sales support. All right. So that is the entire fundamental and idea behind setting up this professional services. Okay. We truly believe in proactive management of tracking of all incidents. We have set up a specific ticketing management service, okay, so that we can efficiently not just route all the tickets, but then also focus on the SLA part, right? So, depending on the ticket's priority, we want to make sure that we extend and provide the support as soon as possible. Okay. Now, it is also possible that there are issues that can occur anytime, anywhere. All right. So, use this team for your on-demand remote support, right? For a quick issue resolution. The professional services team is also enabled, right, to go on site and then help you along with your technician visit your customer and then on site help them out, right? So the technical team is not just gonna kind of sit in the office and then help you do the remote session, but also visit you on site and then help you out, right? So anyways, I think you get the gist of it. Okay. But like I said, the ITCG professional technical services team works as an extension of your team. All right. I would really urge that you utilize this team as much as possible and then take it from there. Right. The idea behind setting up this team is so that you can focus on closing more business. Now, every time we partner with a specific OEM, for example, OpenText, right? OpenText, uh, Ram sir, Ram sir and then Abhishek sir as well, right? So they help us out going out of their ways, all right? Before we go and start pitching these services or solutions in the market, right? We enable ourselves first, all right. So, and then I'm not saying it, we have certifications, right, to really talk about it. Okay, so these are the OpenText certifications that our technical team has completed before we go and then start sharing that with the entire partner fraternity. Okay, right. So, for example, Ashok Rawat, who has also joined this webinar, and then he will be talking to everyone about enabling the cloud-to-cloud backup in the future session, is also OpenText certified, right? So the team members that we have are all OpenText certified. We always want to make sure that team is certified so that the quality of service that you receive is top-notch. Okay, and then like I said, you don't have to wait for the post sales support, right? And then you can just get it instantly with ITCG. Now, moving on, like I said, I'm not going to take much of time, right? I'm just going to introduce two of our speakers. We have Amit Thakur, who is basically our go-to person when it comes to OpenText, right? He has
deep knowledge on or deep sales expertise across backup solution, especially OpenText, right? He is also known for simplifying complex topics and then delivering high impact solutions. All right, so he's going to talk about quite a few things, including deal registration, how to take OpenText certification, right? Enabling your technical team as well, okay, or enabling your sales team as well. All right, very, very practical stuff. Then we will move on to Ashok Rawat, right? So he is part of our technical team, and then he's basically our OpenText technical champ. Okay, he will walk us through the cloud to cloud backup platform, and then at the end we will have some time left for question and answer, right? And then, like I said, you have the entire ITCG team along with Ram sir to kind of answer any questions related to OpenText. By end of this entire enablement session, the idea or the goal that we have is to make you independent, okay, when it comes to certification, raising deal registration, okay, specific platform walkthrough, all right, very, very basic and then deep dive questions related to backup and how to kind of sell these solutions further, and then a bit on the technical piece, right? So that's the goal that we have kept in mind with this entire enablement session. So with that, I will pass it on to Amit. Amit, over to you. Yes, thank you. Thank you, sir. Thank you for nice introduction. And again, good morning, everyone, to joining this session. So today we will discuss about more on Accelerate portal and again cloud to cloud. Okay, so I'm just sharing my screen on that. Sanket sir, could you confirm if my screen is visible? Yes, your screen is visible. Okay. Okay. सो जैसे कि संकेत सर ने बताया लास्ट, और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमने लास्ट प्रीवियसली बहुत सारे पार्टनर्स के साथ डिस्कशन किया है एंड क्लाउड टू क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है क्लाउड एलाई फॉर सास एप्लीकेशंस बैकअप के लिए, तो वो तो हमने एनेबल किया ही है। बट मेरा थॉट प्रोसेस यहाँ पे ये था कि हम पार्टनर्स को पहले एजुकेट करें, उन्हें सर्टिफाइड करें, डील रजिस्ट्रेशन के लिए हम उन्हें ऑथोराइज करें, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और प्रोएक्टिवली वर्क कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सेलरेट पोर्टल जो है हम आप लोगों को एज अ पार्टनर आपको ऑनबोर्ड करा रहे हैं, तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, so we will go step by step. I'm just sending the link in chat box to register yourself. Okay, so Sanket sir, if you can allow audience to speak, then we can do interactive session on this. Sure. I'm just link in chat box, so everyone can register this form with this link, so they can access this portal as well. Okay, and if anyone has any queries or anything else, you can ask me directly. तो ये जो पार्टनर पोर्टल है, जब आप एक बार एक्सेलरेट का फॉर्म सबमिट करते हैं, उसके बाद आपको ये पार्टनर पोर्टल एक्सेलरेट का एक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो एक्सेलरेट के अंदर जो फर्स्ट ये होम पेज है, होम पेज के अंदर ही आप देखोगे मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, लाइक डील रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे। ओके, सो डील रजिस्ट्रेशन के अंदर जब आप जा रहे हो, तो अगेन यहाँ से आप लैपटॉप साइड में देखेंगे रजिस्टर ए न्यू डील। ओके, तो रजिस्टर न्यू डील जब भी आपको करना है कोई भी डील केस प्रोटेक्ट करने के लिए, देन यू हैव टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, डील रजिस्ट्रेशन, सो आपका केस प्रोटेक्ट हो जाएगा आपके बिहाफ में। ओके, सो हियर यू हैव टू put every details of end customer like email address, phone number, first name, last name and company name. Okay, and again address, city, these are the mandatory field, and you have to choose which product you are positioning or what product the customer want to
purchase or interested in on those products. Okay, so that is you need to select, and again you have to register. Click on register on this day. So you will get a confirmation of deal registration. After that, our team will be approve this deal, and again you will get a confirmation mail on that what is your deal approved or not. Okay, so this is the simple way to register your deal. So again, accelerate intro is here is a 5 minutes video of accelerate intro. So I am skipping this video just because I am doing that only. So going ahead, and if you see the training part, okay, so here is everything available, like features, courses, and data protection certification, data security certification, everything. Okay, so from here you can start for your certification, and course material you can read, and everything will be done from here. Okay, and then like if you click in these courses here, you can also search the all related courses. Okay, so like here is advanced email encryption technical certification, cyber resilience certification, carbonite, and everything you can see here. Multiple certifications are there, so you can just complete it course, and then you have to take an exam, and then you get a certificate of it. So here is a online training for that, and after completing this training, you will get your certificate here. Okay, so I have completed few certifications. So just you can see here like a Bevrud business endpoint certifications. Okay, so we can here download from here my certificate. So you will also get the certification like this. Okay, if anyone have any questions, guys, you can unmute and ask. In terms of collateral and co-marketing, co-branded co-marketing material, you can find here in collateral segment. So here is everything available. Like if you want to go to market strategy and download brochures, presentations, or demo video. So everything is here. You need to just click on this if you want to like customizable content. So आप लोगों को यहाँ पे ये कस्टमाइजेबल कंटेंट भी मिल जाएगा. यहाँ पे आपका लोगो एंड एवरीथिंग आप डाल के इसे शेयर भी कर सकते हो. ओके, डाउनलोड ओनली वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पे. कंटेंट वाइज कंटेंट ये लाइक एक सिंगल पेजर भी है. सो के ऊपर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अगर लिंक चाहिए तो ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. तो ऑल एसेट टाइप एंड एवरीथिंग यहाँ पे दिया हुआ है. सो लाइक आप प्रोडक्ट फैमिली वाइज अगर फिल्टर करना चाहते हो या फिर एसेट टाइप वाइज करना चाहते हो, सो यू कैन फिल्टर इट आउट एंड देन डाउनलोड. सो आपको ढूंढने के लिए भी इजी हो जाएगा. लाइक डेमो वीडियो पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके, सो डेमो वीडियो के अंदर हमें ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे, कौन से डेमो वीडियोज अवेलेबल है. ओके, ऐसे यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं और कॉपी टू लिंक करके कर सकते हैं. Ram sir, do you have any inputs to add? I think you raise your hand. No, Amit, I think that was by mistake. I think you're Okay. going good. Okay. So everything is here available on co-marketing related or marketing related. You can download everything here from like email content you can use from this segment. So here is everything available. Collateral, social media plugin, PAs and everything. Okay, so everything available in this. If you go to more and
if you want to use NFR licenses for you, then you have to request from here, request NFR. Okay, so you will get this page and you have to submit your inputs and you will get the NFR license to use. Okay, so you have to add product and your company details. Okay, so like this, in this box product, you have to select the product. Which product do you want to use? Okay, so from here you can directly take the NFR licenses for your company, organizations, or your technical team can elaborate or use this product. Okay. If I can add something, Amit, I'm very sorry to interrupt. या जब अमित बता रहे थे मार्केटिंग मटेरियल के बारे में, तो यहाँ पे एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा कि आईटीसीजी ने मार्केटिंग के अंदर भी काफी कुछ प्रोग्रेस किया है, इन्वेस्ट किया है, राइट। और हमारे पास हमारा भी मार्केटिंग टीम है, ओके। एंड देन जैसे हम लोग ये प्रोफेशनल सर्विसेज को पूरा टीम बिल्ड किया है हमारे पार्टनर्स के लिए, वैसे ही राइट जो हमारा मार्केटिंग टीम है उसको भी आप यूज कर सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्रिएटिव बनाना है, ओके, अगर आप कोई ऑफर लॉन्च कर रहे हो या तो फिर कोई प्रोमो है जो चल रहा है, राइट, सो इवन दैट थिंग इज समथिंग वेयर आईटीसीजी का मार्केटिंग टीम कैन हेल्प यू, right? Of course, for all the products that, all the solutions that we provide, right? So that is also an option that everyone can use. And then even for open text, right? I'm stretching it, right? But even for open text, please feel free to reach out to me or your partner account manager, and then we will be more than happy to help you out with creating the marketing material for open text. That's it. Thank you, Amit. Thanks. So, and again, if you want to manage your customer for endpoint, so you can go here in more option and drop down, you can click on manage. So here you can manage everything about OpenText endpoint security, and like here you can go manage escalate account setting, your users, and manage your Carbonite safe customer. From here you can add multiple customers or give them directly demo or POC. For POC you can directly give them licenses to utilize. Okay, demo, trial, everything is available directly to you and for your customers. So just clicking on showing this part also. I think this part is most important. So from here, you can see all the options are available, like add new customers, buy a subscription, or start a trial, or add an existing customers. So everything is here. If you want to give any customers to a trial, so you can click here and give their details like first name, company name, last name, contact details, and you have to select these two options. There is two options, like yeah, if you click on yes, I will be account administrator, I'll manage everything including installation, data restore, and billing. Please don't email to the customer uses this account. Then OpenText or ITCG will not come into the picture, or like directly without any, if your permission, without any without any of your permission, they will not come to in this picture. So or if you like click on this, the customer will be the account manager administrator, that I will handle only the billing. Then we will come into the picture and provide the necessary steps to help it out. Okay, and then you have to create just. So once you click on that, then
you or your customer will get a link with download software, and then you have to implement. Okay, so from here you can directly give trial or demo to your customer. And this is for endpoint, like Carbonite endpoint backup solutions. So I think I have almost covered all the things of Accelerated Partner Portal. So now I am giving handover to Ashok, who will take you through the Cloud Ally portal, SaaS applications backup portal. So Ashok, over to you. If you guys have any questions related to this, you can directly ask me, or Ramshar, you can, if you want to add anything on this part, so you can add. Sure, I think, Amit, thank you for walking through the portal. Okay, so the important part here is the first registration from the partner side they need to do in order to access this portal. And then they can start using it, starting from the deal registration and getting the marketing material and training, online training and all, and certifications. So I think that that's the first step, which they can start with. And once they have got the opportunities, where they want to work with you and us, we can definitely help. Sure. I think I have missed one thing. So deal raise opportunities, DR incentive, I think so. So just one second. So here is one incentive plan also available for deal registration. So Ram sir, if would you are like sharing to... something, we can't see it. If you can just one second. I think on the link that you shared, on the same link itself, there are details, I believe, on the chat, the link which you shared. Ideal rewards. Yeah. Is it visible now? Yes, yeah. It's visible now. So Ram sir, I would like to request you to cover this part to you. Sure. So this is pretty simple. Go down to the table where the amounts are mentioned. Okay, that we can. Okay. Just give me a moment. Yeah, this one. Yeah, just allow me a moment. Okay, so while Ram sir, comes back, I can speak about this specific reward structure. All right, and then Ram sir can conclude this specific reward structure as well. Right, so जब भी आप accelerate पे जाएंगे और वहां से जब deal register करेंगे, okay, right, so वहां पे आपको सिर्फ ये प्रोमो कोड डाल देना है IDEAL25, ठीक है। वो डील रजिस्टर होगा और फिर वो बेसिकली आएगा हमारे पास अप्रूवल के लिए। हम लोग एनीवे टच में ही रहेंगे, ओके। एंड देन because all these are going to be very genuine opportunities, right, and then we will go ahead and approve it, ठीक है। तो वो जैसे ही genuine opportunity का डील DR अप्रूव होगा, right, so you basically qualify for 25 USD, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर वही सेम डील बाद में जाके क्लोज होता है, दैट इज ऑल दैट वी वांट, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन जो डील का अमाउंट रहेगा, राइट, सो उसका वो जो स्पेसिफिक रेंज है वो यहाँ पे बताया गया है कि अगर वो डील का रेंज $100 से लेके $1,500 तक रहेगा,
then you get 25 additional USD, and then it goes on. If the deal amount is 10,000 plus, then you get $250 additionally, right? So मान लीजिए कि आपने डील रजिस्टर किया, आपका डील पूरा अप्रूव हुआ, ठीक है, राइट, यूजिंग द सेम एक्सेलरेट प्लेटफॉर्म जो अमित ने अभी बताया, राइट. तो जैसे ही डील अप्रूव होता है, यू क्वालिफाई फॉर $25, एंड देन लेट्स एज्यूम दैट द सेम डील बाद में जाके क्लोज होता है, देन यू क्वालिफाई फॉर $250 एक्स्ट्रा, ठीक है, एंड एडिशनल. सो दैट्स बेसिकली व्हाट दिस एंटायर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट. ओके. और ये पूरा जो एनेबलमेंट सेशन भी हम लोग कर रहे हैं, वो यही बताने के लिए किया गया है कि ओके, हाँ, आप ये पूरे रिवॉर्ड स्ट्रक्चर का बेनिफिट कैसे ले पाए, राइट. आई एम श्योर सब लोगों के पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे ही, ठीक है, लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम लोग ये डीआर करें कहाँ से. ओके, राइट, ये डीआर का प्रोसेस क्या होगा. सो वो आ जाता है पूरा एनेबलमेंट सेशन में, और वही हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. So I think that's what was needed to cover in this entire reward structure, right, Amit? Yes, yes, sir. Thank you so Yeah. much. Yeah. Yes, Ram sir, you can add your input. Yeah, sure. So I think this is pretty straightforward. Okay. As Sanket has already explained, so this is directly linked to the DR approved spiff amount, and then on the closure also. So whatever you Is are doing a qualified DR, you get $25 upfront, and based on the deal value, you get additional amount over and above the deal reg amount. Okay, right. so that's pretty much about it. Yeah. Okay, so that's all from my side. I am now handing over to Ashok, so who will be walk through Cloud Ally portal. Ashok, over to you. Yeah. Thank you, Amit, Thanks. and good morning all. I'm going to demonstrate technical part, as two platforms are available here, OpenText. That one is cloud to cloud backup, and another one is endpoint backup. So I'm sharing. Ashok, please share your screen. Yeah. So my screen is visible. Not yet. Still loading. Not yet. Yeah, it's still loading. Okay, we can Now see. it's further. हम देख सकते हैं अशोक. Yeah. Thank you. Okay. Just give me a moment. So, sir, we are talking about first cloud to cloud backup. So, this is a partner portal, as you see here. एक पार्टनर पोर्टल है हमारा, जिसमें हम बेसिकली ITCG हम पार्टनर यहाँ पे ऐड करते हैं. अगर आपको ऐड किया है तो आपको भी इस सेम लिंक पे जाना है, partners.cloudally.com. इसमें आपको पार्टनर का लॉगिन मिलेगा, जिसमें आप कस्टमर ऐड कर सकते हो. अभी हमारा यहाँ पे हम पार्टनर ऐड कर रहे हैं, आपको वहाँ पे कस्टमर ऐड करने. तो कस्टमर ऐड करते हो, आपको इस तरीके से कस्टमर दिखेंगे आपने ऐड करने के बाद. और यहाँ पे सिंपल आपको ऐड न्यू अकाउंट एज अ कस्टमर करना है. देन यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, देन उनका ईमेल आईडी आएगा, पासवर्ड जो आपको सेट करना है वो आप कर सकते हो. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे डेटा सेंटर क्या सिलेक्ट करना है. तो मोस्टली यहाँ पे एशिया पैसिफिक आएगा. अगर आप मुंबई और इंडिया के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, कस्टमर हमारे इंडिया और मुंबई के लिए है, तो एशिया पैसिफिक आएगा. और यहाँ पे अनदर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे ट्रायल विथ एक्सपायरेशन, ये हमें सिलेक्ट करना है. जैसे कि हमारा ट्रायल होता है यहाँ पे 15 डेज का, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा जब हम ये स्टार्ट करेंगे. अगर हमने ऑटो सब्सक्रिप्शन किया है तो वो मंथली ट्रायल खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक
सब्सक्राइब हो जाएगा, तो आपको बिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2-3 पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं जब भी कस्टमर आप ऐड करोगे। तो फर्स्ट है आपको यहाँ पे डेटा सेंटर कौन सा सिलेक्ट करना है, तो अगर इंडिया की कंपनी है तो एशिया पैसिफिक आ जाएगा यहाँ पे, एंड ट्रायल विद एक्सपायरेशन आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। सो इस तरह से आपको यहाँ पे कस्टमर ऐड हो जाएंगे। अब कस्टमर का अलग पोर्टल है लॉगिन करने के लिए, जैसे हम कस्टमर के बिहाफ में हम भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कस्टमर का अकाउंट। सो फॉर एग्जांपल अभी एक टेस्टिंग के लिए हमने कस्टमर ऐड किया हुआ है यहाँ पे। सो app.cloudly.com ये कस्टमर के लिए अलग से एक लिंक होगा, राइट। एंड उसमें जो भी आपने ईमेल आईडी रजिस्टर किया हुआ है वो ईमेल आईडी क्रेडेंशियल डाल के यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। सो फर्स्ट स्क्रीन जो है लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको ये स्क्रीन दिखेगा, जिसमें आप O365 के सारे प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे क्लाउड टू क्लाउड बैकअप जो है आप यहाँ पे ले सकते हो। देन गूगल के वर्कस्पेस है, गूगल शेयर ड्राइव के है, बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स है, सेल्स फोर्स है। सो इस तरीके से हम इतने प्लेटफॉर्म का जो क्लाउड बैकअप है हम ले सकते हैं। तो हमें जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल O365 का हमें यहाँ पे बैकअप लेना है, तो हमें जस्ट सिलेक्ट करना है यहाँ पे कि किस चीज़ का हमें बैकअप लेना है। अगर पूरा 365 का बैकअप लेना है तो कंप्लीट 365 यहाँ पे आ जाएगा, और हमें चाहिए कि हमें सिर्फ शेयर पॉइंट का बैकअप लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें सिर्फ शेयर पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेट में एक चीज़ मस्ट है, जैसे कि आप जानते हो एडमिन क्रेडेंशियल्स यहाँ पे होने ज़रूरी है। जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डालोगे वो एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स वाला होना चाहिए। एंड ऑथेंटिकेट जैसे हम करेंगे तो इस तरीके से हमें वो ऐड हो जाएगा स्क्रीन। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमने शेयर पॉइंट ऐड किया है यहाँ पे, तो शेयर पॉइंट कितने शेयर पॉइंट हमने हमारे यहाँ पे ऐड है, जैसे हमने 50 शेयर पॉइंट हमारे साइट्स है 50 शेयर पॉइंट्स के, तो उसमें से हमें कितनों का बैकअप लेना है। सपोज 50 में से हमें 40 का लेना है, तो हम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने का हमें लेना है बैकअप। सेम ईमेल का भी है, एक्सचेंज हमें ऐड करना है। एक्सचेंज में जैसे हमारे अभी यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हमने 12 अकाउंट्स ऐड किए हुए हैं, तो आपको इसमें से 12 में से कितने अकाउंट्स का बैकअप लेना है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसा यहाँ पे दिखा है कि 12 ईमेल आईडी है यहाँ पे, इसमें से तीन का हमसे बैकअप लेयर है जो अनलाइसेंस है, तो उसका हम बैकअप यहाँ पे लिया हुआ है। रिकवरी करना है तो जस्ट यहाँ पे आपको रिकवरी का यहाँ से भी आपको ऑप्शन है, रिकवरी क्लिक करके आप रिकवर कर सकते हो। एंड इसको शेड्यूल भी कर सकते हो बैकअप, जैसे ये नेक्स्ट बैकअप ये 18 घंटे बाद होने वाला है, ऐसा यहाँ पे शेड्यूल किया हुआ है। तो आपको 18 घंटा वेट नहीं करना है, किसी रीजन से आपको इमीडिएट बैकअप लेना है तो आप इमीडिएट भी बैकअप नाउ पे क्लिक करके बैकअप ले सकते हो। देन रिकवरी का भी सेम ऑप्शन है सर यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि कुछ आपको प्रीवियस डेट का मेल्स एंड शेयर पॉइंट का कुछ साइट्स वगैरह रिस्टोर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे आपको क्लिक करना है यहाँ पे रिकवरी में, और कौन से डेट का आपको करना है वो यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है इस तरीके से। एंड आप कंटिन्यू करोगे तो आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, अगर अवेलेबल है तो। जैसे डाउनलोड करने के लिए भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप अमेजोन के लिए, अजूर के लिए, बॉक्स के लिए, कहाँ पे आपको डायरेक्ट रिस्टोर करना है वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको लोकली डाउनलोड करना है तो लोकल का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से आप रिकवर भी कर सकते हो डेटा लोकली एंड इवन क्लाउडली। जॉब्स आपने इसमें क्या रन किए हैं क्या नहीं किए, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा जॉब्स में, रनिंग में। एक्टिविटी में यहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिट के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें क्या क्या एक्टिविटी हमने किया है उसका रिपोर्ट्स हमें कुछ चाहिए, पूरा लॉग्स चाहिए, तो वो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्टिविटी में। सेटिंग में यहाँ पे हम यूजर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी सिंगल यूजर हमने ऐड किया है, ये सिंगल यूजर ही सिर्फ एक्सेस कर पाएगा यूजर एंड में, कस्टमर एंड में। तो हमें अगर चाहिए कि कस्टमर के और मल्टीपल यूजर्स ऐड करने हैं कि बाकी के यूजर भी वो पूरा प्लेटफॉर्म मैनेज कर सकते हैं क्लाउड वाली का, सो यहाँ से हम यूजर ऐड कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे उनका ईमेल आईडी डालना है, हमें पासवर्ड क्या सेट करना है वो डालना है। देन यहाँ पे रोल क्या देना है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देना है कंप्लीट, उसको एज इट इज जो है एडमिनिस्ट्रेटर का चाहिए रोल वैसा करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करना है। अगर हमें डिफाइन करना है कि उसने क्या एक्सेस लेने का उसको क्या रोल मिलना चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे
बॉक्सेस सिलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है, टीम्स है, इतना ही उसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का ही पूरा मैनेज करना चाहिए, तो वैसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इतना सिंपल है प्लेटफॉर्म। फर्स्ट तो आपको पार्टनर का है, जहाँ पे आपको कस्टमर डायरेक्ट ऐड करना है। कस्टमर ऐड करने के बाद आपको ये जो अलग लिंक है कस्टमर के लिए वो शेयर करनी है कस्टमर के साथ, एंड उसको वेलकम ईमेल भी जाएगा। तो वेलकम ईमेल के साथ उसमें सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली रहेंगे एक्सेप्ट पासवर्ड। वो पासवर्ड खुद से रीसेट कर सकता है। एंड यहाँ पे इस तरीके से जैसे मैंने बताया, ये स्क्रीन आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन से क्लाउड प्लेटफॉर्म का आपको बैकअप लेना है, देन आपको वो ऑथेंटिकेट करके जस्ट सिंपली, एकदम सिंपल प्लेटफॉर्म है सर, जैसे मैंने दिखाया। ज़्यादा कुछ फीचर्स मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम सिंपल है। इसका यही एक ब्यूटी है, एक बड़ा फीचर इसका यही है कि ये बहुत सिंपल रखा है और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप न्यू भी हो इस प्लेटफॉर्म के लिए तो भी आपको इजीली ये अंडरस्टैंड हो जाएगा देख के। सो ये रहा था, ये था अभी क्लाउड टू क्लाउड बैकअप का पोर्टल मैंने दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एंड पॉइंट बैकअप। तो हाँ, तो ये है यहाँ पे एंड पॉइंट बैकअप। एंड पॉइंट मीन्स यहाँ पे हम यूजर का जो भी डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी यूजर काम करते हैं उसका अगर बैकअप क्लाउड पे हमें चाहिए ऑटोमेटिक, यूजर का हमें बैकअप लेते नहीं बैठना है। मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में ऐसा होता है कि हमें यूजर्स का डायरेक्ट बैकअप चाहिए होता है, बट हमें वो कॉपी पेस्ट करना होता है। यूजर को बोलना होता है कि भाई तुम एक शेयर ड्राइव है उस पर अपना बैकअप कॉपी या पेस्ट करते रहा करो अगर डेटा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सिनेरियो में हम ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हमें एक एजेंट इंस्टॉल करना है। एजेंट इंस्टॉल करने के बाद ये यूजर के लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करने के बाद ये सिंक होगा ऑटोमेटिकली क्लाउड से, एंड ये पूरा बैकअप जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन किया रहेगा आगे उस तरीके से पूरे फाइल्स बैकअप हो जाएंगे। तो ये डैशबोर्ड है उसका। सो इसमें डैशबोर्ड्स में हमें पता चलता है कि कितना डेटा अब तक कौन सी डेट को कितना जीबी का डेटा अपलोड हुआ, देन लास्ट आज कितना हुआ, यस्टरडे कितना हुआ, लास्ट 30 डेज में कितना हुआ, वो भी एक ग्राफिकली हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है। एक्टिविटी समरी, प्रोटेक्टेड डेटा, ये बेसिक हमें मिल जाता है इंफॉर्मेशन ग्राफिक के थ्रू। यहाँ पे फिर कंपनी, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंपनी, यूजर्स एंड डिवाइसेस, ये तीन पार्ट है। अगर मैं कंपनी पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे आप देखोगे कितने डिवाइसेस आपने ऐड किए हैं, यूजर्स ऐड किए हैं, उसमें से कितने डिवाइसेस पे बैकअप आपका चल रहा है। जैसे मैंने अभी 8 यूजर यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, उसमें सिर्फ 5 डिवाइसेस है जिसका हम बैकअप ले रहे हैं फिलहाल टेस्टिंग के लिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा ब्रीफ मिल जाएगा। यहाँ से अगर आपको यूजर मल्टीपल ऐड करने बल्क में, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट यूजर्स कर सकते हो। देन आपको डिवाइसेस भी कुछ ऐड करने हैं तो यहाँ पे मल्टीपल आप कर सकते हो एक साथ। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे पॉलिसीज, कि हमें क्या डिफाइन करना है, यूजर का क्या पॉलिसी डिफाइन करना है, क्या बैकअप होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन से फाइल बैकअप होना चाहिए, वो सारा हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये बेस्ट पॉलिसी जो होता है, बेस्ट पॉलिसी एक डिफॉल्ट पॉलिसी होती है। इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो इसे हमें अगर हमें कुछ नया पॉलिसी क्रिएट करना है तो यहाँ पे सेव एज करना होता है उस पॉलिसी को। देन सेव एज करके यहाँ पे नाम देना होता है पॉलिसी को, जो भी आपको नाम देना है। देन वो पॉलिसी आपको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, वो ऑप्शन अवेलेबल है। देन आपको यहाँ पे पॉलिसी सेंट्रलाइज, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हम ईमेल आईडी यहाँ पे जिसको राइट्स देंगे सिर्फ उसी ने मैनेज करना चाहिए पूरा साइट, या यूजर ने भी बैकअप कुछ उसको लेना है तो उसने मैनेज करना चाहिए बैकअप, या रिस्टोर बैकअप कुछ करना चाहिए यूजर ने, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है अगर देना है तो। देन एंड यूजर ने अगर सिलेक्ट करना है कि कौन से फाइल्स बैकअप होना चाहिए, वो एंड यूजर डिफाइन करे, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है कि एंड यूजर खुद से डिसाइड कर सके कि क्या क्या बैकअप जाना चाहिए, सब बैकअप नहीं जाना चाहिए ऐसा। तो उसमें यहाँ पे कौन से फाइल टाइप्स के बैकअप जाने चाहिए वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी डॉक्यूमेंट्स में कितने सारे फाइल्स के फॉर्मेट्स है, एक्सटेंशंस है। सो उसके अलावा और भी कुछ एक्सटेंशंस है, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करके, फॉर एग्जांपल .abc कुछ एक्सटेंशन है तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो वो एक्सटेंशन का फाइल भी यहाँ पे बैकअप हो जाएगा।
देन यहाँ पे रूल हम ऐड कर सकते हैं कि कौन सा बैकअप होना चाहिए, कौन सा नहीं बैकअप होना चाहिए। जैसे कि वीडियोस है, मुझे चाहिए कि वीडियोस का मुझे कोई बैकअप नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑल वीडियोस मेंशन करके डाल सकता हूँ, यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। तो सो दैट कि जितने भी वीडियोस हो गए यूजर्स के सिस्टम पे वो नहीं हो गए। और यहाँ पे हम ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से ड्राइव में का बैकअप उठाना चाहिए। अगर हमने यूजर को किया हुआ है, बताया हुआ है कि सिर्फ डी ड्राइव में डेटा रखे, तो हम यहाँ पे डी ड्राइव से ही डेटा बैकअप हो ऐसा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा है कि यूजर को पता नहीं कौन से ड्राइव में क्या, वो अपने डेस्कटॉप में भरते जा रहे डेटा या डॉक्यूमेंट डाउनलोड में है, तो हम ऑल ड्राइव भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सो दैट कि जो भी डेटा यूजर जहाँ पे भी रख रहा है पूरा बैकअप हो। तो एवरी ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे कितने टाइम में ऑटोमेटिक ये जो एजेंट है वो कितने टाइम में बैकअप लेगा ये ऑटोमेटिकली। जैसे एवरी 15 मिनट्स में ये चेक करेगा कुछ अपडेट हुआ क्या, कुछ नया, कुछ बैकअप के लिए फाइल्स आया है क्या, तो ये एवरी 15 मिनट्स में ये चेक करेगा। तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितने मिनट्स, कितने हवर्स, कितने डे में ये बैकअप लेना चाहिए, हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हम ये शेड्यूल भी कर सकते हैं कि हमें कितने बजे शेड्यूल बैकअप हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक क्लाउड पे। तो लेकिन इस पे एक ही कंडीशन है कि जो टाइम हमने मेंशन किया है वो टाइम पे एंड यूजर का डिवाइस ऑनलाइन होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तो ये बैकअप होगा क्लाउड पे। तो मोस्टली ये ऑप्शन हम रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज इसमें चांसेस होते हैं कि बैकअप फेल जाने के, बिकॉज वो टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे जो शेड्यूल किया है वो टाइम पे जो यूजर का डिवाइस है वो ऑनलाइन नहीं होता है बहुत बार, तो वो टाइम पे जो बैकअप है फेल जाने की चांसेस है। तो प्रोफाइल का पूरा बैकअप लेना है यूजर का, तो भी वो ऑप्शन अवेलेबल है। So, Ashok, just to add, Ram here. हाँ हाँ। So on the previous that backup schedule which you just explained, okay, so this is again this scenario based. In some cases, imagine where customers have got users who are like going to be available by default, and they want to set up a specific time window itself for backup. So that this may be useful for those scenarios. Okay. So depending on the customer need, they can configure it. So, maybe let's say for some groups of users, they may want to enable it, right? So they can do that. They can create a policy where this is enabled for those certain group of people in the organization. But for rest others, they may want to decide to disable it. That is also done. So that's what the use case is basically for this. Please यस, go ahead. थैंक यू राम सर। डिवाइस को हम ट्रैक भी कर सकते हैं, लोकेशन कहाँ पे वो डिवाइस है, अभी कौन से लोकेशन पे है, तो वो भी हम इनेबल करके उसका डिवाइस ट्रैक कर सकते हैं। रिमोट वाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर हमारा कुछ डिवाइस सपोज लॉस्ट होता है या कुछ चोरी हो जाता है, तो उस केस में हम पूरा डेटा यहाँ से वाइप कर सकते हैं डिवाइस से। देन एंड यूजर को अगर हमें कोई हाई मैनेजमेंट है, उसको अगर कुछ परमिशन देने हैं कि वो एंड यूजर खुद से रिस्टोर करना चाहिए डेटा क्लाउड से, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, इनेबल डिसेबल करना है तो। Yeah, so again, to add on these 2 points again, the location tracking and remote wipe. These are features related to, you can say, DLP kind of. Okay, so in case, let's say, imagine a scenario where end user has lost their laptop, for example. Okay, so you are able to track their last location whenever that machine is, on or connected. You will be able to see the live location of that device itself from here. So, this is again from the, security point of view. And then remote wipe is again very useful. You may want to set a policy, let's say, if a particular device is not syncing up or getting connected with your with the Carbonite cloud, right? The remotely delete the data or wipe out the data. Okay, so again, depending on the scenarios, you can configure this. Maybe different companies may have different policies.
keeping it with, let's say, 1 month or 2 months. If machine is not connected, you delete it. So depending on that, it is very flexible. Accordingly, you can configure it out. Very, very useful DLP functionality, which many of the enterprise grade customers would definitely ask you. And especially for the, top users, or I would say VIP users of the company, where, data is sensitive, and they want to make sure that data is not falling into wrong hands and it is secured. End user self restore, as Ashok explained, this is again in the larger environment. So let's say you have sold this solution to a customer who has got, let's say, 500 or 1000 users, and administrator, they don't want to take a headache of data restore request coming to them from users. Okay, so let's say Ram is the user who has got some data to restore. How do I restore my data? I approach Ashok saying that, okay, this is my data which I want to restore. Okay, so this feature allows user themselves to restore their own data. So you can enable or disable. You may just want to give this permission to users who can restore their own data, backup data. Well and good. So very useful again in the larger setups where customer have got large number of users. So if they want to avoid too many restore requests in those scenarios, this could be very useful. Excuse me. Ram sir, Shashikant here. Yes, hi Sashi. Hi. Actually, that is remote wipe, quick delete. Yeah. That is a good feature, but we can wipe out the whole data, right? So it is Yeah. possible to recover from the third-party application like Stellar or any else, so which is they are able to recover or not because they have a separate solution, No, right? no, no, Okay, okay, they cannot. okay. Then retention and storage option is also available. You can define if you have purchased limited storage, that 100 GB and unlimited storage, both options are available in endpoint backup. अगर आपने अनलिमिटेड लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड रिटेंशन एंड अनलिमिटेड स्टोरेज आपको मिल जाएगा. अगर आपने लिमिटेड स्टोरेज बाय किया हुआ है तो उसमें आपको डिफाइन यहाँ पे करोगे कि कितने वर्जन्स आपको मिनिमम यहाँ पे मेंटेन रखने हैं और कितने टाइम तक आपको वो यहाँ पे क्लाउड टू क्लाउड यहाँ पे रखना है ऑनलाइन क्लाउड पे, तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है. देन यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि .pst फाइल, जैसे सिंगल फाइल की साइज अगर मैक्सिमम 10 GB है, लार्जेस्ट फाइल, तो 10 GB से ज़्यादा है तो भी वो बैकअप नहीं होगा. ऐसा यहाँ पे सेटिंग है, हम डिफाइन कर सकते हैं, इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं. अगर किसी यूज़र की फाइल .pst की फाइल सपोज फॉर एग्जांपल 25 GB है तो और वो तो और इसीलिए और यहाँ पे हमने 10 GB किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें 25 GB या मोर देन 25 GB यहाँ पे साइज डिफाइन करना होगा सो दैट कि जो बैकअप है एंड पॉइंट बैकअप वो फेल ना जाए. अगर यहाँ पे 10 GB है और किसी फाइल की साइज 10 GB से ज़्यादा है तो वो फाइल का जो बैकअप है वो फेल जाने के चांसेस है. तो ये कि हमें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. देन यहाँ पे बैंडविथ मैनेजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है. जैसे फर्स्ट टाइम अगर हम ऑब्वियसली बैकअप लेंगे तो हमें पूरा बैंडविथ यूज़ करना होगा तभी बैकअप जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ज़्यादा बैकअप होता है. देन सेकेंड टाइम हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं कि कितना हमारा बैंडविथ यहाँ पे यूटिलाइज हो जाना चाहिए क्लाउड बैकअप के लिए. सो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वो चीज़. मोबाइल के ब्रॉडबैंड से भी हम अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है. तो इस तरीके से ये पूरे पॉलिसीज है जो हमें फर्स्ट टाइम पूरे कॉन्फ़िगर करने होते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होती है. अगर हमें हमारे तरफ से कुछ मॉडिफाइड करनी है तो उसे सेव एज करके हम कर सकते हैं उसको. Hi, Shashikant there again. I have one question. The backup is a file level and folder level also it is happened, but the image level backup is also happened.
No, we don't provide image level backup for endpoints. Okay. You can back up the profile of the user Okay. that is there. Yeah, user profile backup can be done. Okay. So the logic here is that keeping an image backup of endpoint, typically most of the customer don't need because of the size of the overall backup. Good afternoon. देन डिप्लॉयमेंट सेक्शन में यहाँ पे विंडोज एंड मैक दो प्लेटफॉर्म के लिए ये अवेलेबल है एंड पॉइंट बैकअप। सो विंडोज के लिए करना है तो हमें विंडोज का ये सेटअप डाउनलोड करना है, मैक के लिए करना है तो मैक का सेटअप डाउनलोड करना है। विंडोज के लिए करते हैं तो वो सेटअप हम इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कोड होता है जो हम यूजर जब ऐड करते हैं यहाँ पे, तो वो ऑथेंटिकेशन कोड यहाँ पे हमें मिल जाता है, या जो भी हम यूजर ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐड यूजर का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे हम यूजर ऐड करते हैं, जस्ट ईमेल आईडी यहाँ पे उसका इनपुट करेंगे, देन उसका फुल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पे हमें टाइम जोन प्रॉपर सिलेक्ट करना है। अगर इंडिया का है तो चेन्नई का आएगा, देन आपके हिसाब से टाइम जोन सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे जैसे आप यूजर को क्या रोल देना है वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर देना है या रीड ऑनली देना है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और जैसे आप यहाँ पे ऐड यूजर करोगे तो यूजर यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और उसके अंदर आपको ये इस तरीके से एक्टिवेशन कोड आपको मेल पे भी जाएगा। सेम मेल पे भी आपको एक्टिवेशन कोड जाएगा, तो आपको एक लिंक है इसका, तो वो लिंक और जो मेल में आपको एक्टिवेशन कोड आया रहेगा वो आपको वहां पे डालना है सेटअप कंप्लीट होने के बाद। ये जैसे विंडोज और मैक का सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे वो पॉपअप विंडो एक आ जाएगा, वहाँ पे आपको लिंक मेंशन करना है एंड कोड मेंशन करना है वहाँ पे, एक्टिवेशन कोड। तो आपका वो डिवाइस जो है इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो जाएगा आपके पर्टिकुलर क्रेडेंशियल से। देन यहाँ पे आप यूजर सिंक भी कर सकते हो, एलडैप एंड सिम सिंक्रोनाइजेशन अवेलेबल है। रिपोर्टिंग अवेलेबल है, आपको कुछ शेड्यूल करने हैं रिपोर्टिंग, कुछ रिपोर्ट चाहिए तो उसके भी आप कर सकते हो। सिंगल साइन ऑन का ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे आप आपके डिवाइसेस में सिंगल जैसे लॉगिन किया तो उसी से आपको ये पूरा लॉगिन हो जाएगा कंसोल। हिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि आपने प्रीवियस कौन से डेट का क्या डेटा बैकअप लिया था, वो सारा कितना जीबी का बैकअप रिस्टोर किया था और किसने किया, तो सारा आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा रिस्टोर हिस्ट्री में। अपग्रेड सेंटर में है कुछ आपका जो एजेंट है जो मैंने बोला इंस्टॉल करना होता है डाउनलोड करके विंडोज एंड मैक के लिए, उसका कुछ अपडेट आया है तो वो यहाँ से हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन। देन यहाँ पे पार्ट आता है यूजर्स का, जैसे मैंने बोला यहाँ पे बल्क यूजर भी होम में मैंने दिखाया था आपको डैशबोर्ड में कि बल्क यूजर भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ पे सिंगल सिंगल यूजर भी ऐड कर सकते हैं। उसको यहाँ से परमिशन अगर कुछ चेंज करना है तो यूजर के परमिशन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि क्या देना है, एडमिनिस्ट्रेटर देना है या रीड ओनली देना है, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं परमिशन। देन यहाँ पे डिवाइसेस का ऑप्शन है, जैसे डिवाइस हमने कितने ऐड किए हैं कौन से यूजर के अगेंस्ट, वो यहाँ पे हमें देखने मिलता है। जैसे अभी ये अशोक डॉट राउत यूजर है, उसके अगेंस्ट मैंने ये होस्ट नेम है वो ये डिवाइस मैंने ऐड किया हुआ है, तो उसका पार्शियली अभी ये डेटा हो रहा है, पूरा कंप्लीट डेटा बैकअप नहीं किया जा रहा है इस डिवाइस का। पार्शियली जितना जितना मुझे चाहिए उतना ही बैकअप में ले रहा हूँ, तो इसलिए पार्शियली प्रोटेक्टेड करके ऐसे आ रहा है यहाँ पे दिख के। तो इसमें रिस्टोर अगर करना है तो जस्ट हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या रिस्टोर करना है वो यहाँ पे हमें डिफाइन करने को मिलेगा। जहाँ जैसे डी ड्राइव का कुछ बैकअप लेना है हमें, तो वो हमें यहाँ पूरा ऑप्शन अवेलेबल है, क्या पूरा फाइल का नाम और क्या कौन से फाइल यहाँ पे है उस डी ड्राइव में, वो पूरा हमें देखने मिलेगा यहाँ पे, और वो फाइल हम रिस्टोर कर सकते हैं जहाँ भी हमें करना है। तो उस डिवाइस की ये डिटेल्स है कि क्या क्या उसमें पॉलिसी लगी हुई है, कौन सी पॉलिसी लगी हुई है। देन उस डिवाइस को हम जैसे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, सस्पेंड कर सकते हैं उसका डेटा,
डिलीट कर सकते हैं डिवाइस से अगर करना है तो। हमें सिर्फ रखना है कि क्लाउड पे रखना है, देन डिवाइस में से डेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी नए यूज़र को देना है तो पुराने यूज़र का डेटा हमें सिर्फ क्लाउड पे रखना है, और नया डेटा हमें कुछ देना नहीं है दूसरे यूज़र को, तो हम उस केस में डेटा डिलीटेड फ्रॉम डिवाइस का ऑप्शन भी कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि डिवाइस फॉर्मेट हो चुका है या कुछ हो चुका है तो हम डिवाइस भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से डिवाइस हम यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। देन उसका एक्टिविटी क्या हुआ है, अब तक बैकअप हुआ है नहीं हुआ है, वो सारा एक्टिविटी यहाँ पे देखने मिलेगा। फाइल, जैसे मैंने कहा, फाइल बैकअप लेते हो, कुछ अगर एरर आया तो वो क्या एरर आया, क्यों बैकअप नहीं हुआ, वो यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे अभी कोई ओपन फाइल है ऑलरेडी, तो वो ओपन फाइल यहाँ पे बैकअप नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पे वो फॉल्स बैकअप में आ गया है। तो एंटायर यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हुई है वो यहाँ पे मालूम पड़ेगा। रिस्टोर में हम बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं, जो भी हमें जिस भी ड्राइव का चाहिए वो। एंड देन लोकेशन हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि वो डिवाइस अभी कौन से लोकेशन पे लाइव है, जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था। रिपोर्ट्स में यहाँ पे 30 डेज का हम रिपोर्ट हमें मिल जाएगा, क्या रिपोर्ट हमें चाहिए वो डिपेंड ऑन हमारे रिक्वायरमेंट क्या है। सो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली यहाँ पे हमें, अगर मैं क्या दिखाऊँ कंपनी में वापस एक बार रिवाइज करूँ, तो यहाँ पे पॉलिसी हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद डिप्लॉयमेंट में उसका सेटअप हमें इंस्टॉल करना होता है। देन यूजर्स में हमें यूज़र ऐड करके उसमें हमें ईमेल, ये जो यूज़र है जो भी ऐड करेंगे उसे ईमेल जाता है, वेलकम ईमेल, तो वेलकम ईमेल में भी उसे जो सेटअप है डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है, एंड एक्टिवेशन कोड भी उस यूज़र को मेल में चला जाता है। तो हम वो एक्टिवेशन कोड वहाँ पे डालना होता है एक्टिवेट करने के लिए। देन वो डिवाइस या जो भी एक्टिवेशन कोड हम जिस डिवाइस पे डालेंगे वो डिवाइस यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट ऑफ डिवाइसेस यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से ये शॉर्ट है, ये भी काफ़ी ईजी रखा है, ईजी टू अंडरस्टैंड है पोर्टल जो एंड पॉइंट बैकअप का है। एंड क्लाउड टू क्लाउड का भी जैसे मैंने दिखा है काफ़ी इजी है। तो ये बहुत फ्रेंडली यूज के जैसा है, वन टाइम भी आप ये कंसोल देखोगे और सेकेंड टाइम आप खुद से ही यूज़ करना चालू करोगे। तो इस तरह से ये दोनों प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी इजी है यूज़ करने के लिए, फ्रेंडली है। तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। राम सर, कुछ है आपके तरफ से कुछ बताने के लिए? तो संकेत जी। All right. Thank you so much, Ashok. Uh, that was very insightful, right, and a very detailed walkthrough, right? So now, as promised, right, this is what we wanted to cover. I know thoda time has gone beyond our scheduled time, but yes, we are now open to any questions. किसी को अगर कोई भी question हो, please ask, right? You can also drop it in the chat, okay, and then we will be more than happy to respond to them. But then, like I said earlier, that this was more like an enablement session, okay, and then this was phase one. I really hope that you have good and detailed understanding of how to use all these platforms. आप सब लोग ओपन टेक्स्ट के पार्टनर रजिस्टर ऑलरेडी हैं, ओके, और आप सब लोगों को ये सभी प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी रहेगा ऑलरेडी। अगर आपको नहीं है, राइट, तो प्लीज फील फ्री, रीच आउट टू अस or your partner account manager, and then we will be more than happy to onboard you as a partner on the OpenText MSP portal. Okay, right? But like I said, I believe that all of you are already partners on it and then added as an MSP. ओके, राइट, तो आप सब लोगों को ये सब लिंक्स और ये सब प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस है। हमारा एम था कि आपको बताएं कि ये सब पोर्टल्स यूज कैसे करने हैं। ओके, तो अभी दिस एंटायर एनेबलमेंट वाज टुवर्ड्स letting you know, helping you enable to kind of add your customers onto the portal on your own. Okay, and then also, right, start a 15 days trial. Again, this is only to enable you,
at the end, ITCG is always standing by all the partners, each and every one of you, right? So अगर आपको हमारी help कहीं पे भी लगेगी, please feel free to reach out to us. All right. Ashok is there, Akash is there. We have the entire OpenText certified engineers who can really help us out with not just the demo, like I highlighted earlier, but the POC as well, and then after sales service too. Okay. So that's something that we really wanted to highlight as part of our partner enablement session. Like I said, this is phase one. We will be coming up with phase two. Absolutely not next week. Next week is Diwali, so we will kind of schedule the phase two of this session after the Diwali break is over. So that's it basically from our end. Please ask any questions that you guys may have. Like I said, you can ask, unmute yourself and ask, or you can also put your questions in the chat. Meanwhile, Ram sir, if you want to add anything. Yeah, thank you, Sanket and ITCG team. I think this was a great session, great session. I am sure this would have given a quick view on endpoint and cloud-to-cloud backup to all the participants. As a next step, what I suggest, we should send some write-up on this product, right? As well as what are the top, let's say, 10 features of each of these products, so that all the partners can keep it handy with them, and if needed, they can share it with their customers as well. So that's one point that I want to mention here. Absolutely. We will be following up with everyone with the pointers that you mentioned. And then we will also share the recording of this entire session so you can refer to it at your convenience. And then you can also share that with your colleagues. Good point, Ramsar. Perfect. So that's about it from my side. Awesome. Thank you so much. Yeah, so we are about to end the conversation. I think we have a question from Shashikant ji. Partner portal registration is done by ITCG, or do I do it? We can definitely do the partner portal registration, Shashikant ji. So the ITCG team will be doing it for you. And they can also do by their self also. Okay, so we have shared the link, so they can use submit the sign up form using that link also. Absolutely. Right. So both the options are available. You can use the link which is shared by Amit and also Ram sir. Let me share that link again. Okay, I will share the link one more time, right? So you can use this link and then register yourself, or please reach out to us and then we can register you as well. All right. Any other questions? If not, then I think this was a great session, like Ram sir mentioned, right? We wanted to keep it very short and sweet, right? Keeping everyone's time limit in mind. I also wanted to take this moment to wish everyone a very happy Diwali in advance, right? I really hope that you get a great time off, and then after Diwali we'll be again back, right? We're with our phase two and then more interesting sessions. If there are any questions in the future that you come across, please reach out to your partner account manager or reach out to us directly, and then we'll be more than happy to help. With that, I think we will call it an end. You all have a great day ahead. And thank you so much for your time and joining this session.